Sir, may I? Yes, Good afternoon, sir. Please come. Good afternoon, sir. yes, please be seated. Thank you, sir. Harshit Pandey, Yes, sir. please tell about yourself. Sir, my name is Harshit Pandey. I come from Champawat in Slightly Uttarakhand. louder. I come from Champawat in Uttarakhand. I've done my schooling from my hometown itself. After my 12th standard, I did my graduation in civil engineering from College of Technology, Pantnagar. It comes under 𝐂𝐤𝐴𝐻 University of Agriculture and Technology in Uttarakhand. After that, I prepared 1 year for GATE and ESE exams. Currently, I am working in Engineers India Limited as a management trainee, and this is my first attempt at the engineering services examination. Okay. You are from Champawat. Yes, What does Champawat mean? sir. It is named after a old princess, Champawati princess, which used to be there. And what does Loha Ghat mean? Sir, it comes from two words, Loha and Ghat. Ghat because it lies on the bank of the Lohavati river. Which river? Lohavati river. Okay. And Loha is because the iron content is a lot over there in the soil and in the water as well. So have they started mining or something, or have they tested that? Sir, it's not in that proportion that they have started mining. So how did they get to know that it has got iron content? So because the water there is very red in color. So by that people infer that iron content is high. Okay. And you live in Kalkhudiya Bhavan. Yes. ये कालखुड़िया का मतलब क्या होता है? Sir, it is the caste of our, the owner of the house. His name is 𝐂𝐤𝐴𝐻. ओके ओके ओके. और धनिया कोट, तो धनिया कोट में धनिया होता है क्या? Sir, yes. हाँ? धनिया होता है सर. धनिया होता है? Yes. कोट का क्या मतलब होगा? Sir, I'm not sure about it. I believe coat is used to refer to old settlements. तो धनिया वालों के सेटलमेंट? Sir, farmers grow there. Earlier, a lot of dhania kheti used to be there. Currently, they grow different crops. wheat आजकल and rice. धनिये का क्या भाव है पता? Sorry, sir, I'm not aware of that. धनिया 800 रुपये किलो है. So you are living in the right place to make lot of money if you want. Yes, sir. Anyway, पर एक बार बताओ, तुमने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज से किया है, बरसात में धनिया का रेट क्यों बढ़ जाता है? दिमाग लगाओ. Sir, can I think for a moment? Yes, yes. Demand, supply. Sir, I believe during rains, the crop is not grown that much. Other crops are grown in larger amount. So I believe the supply goes क्रॉप तो down. ग्रो हो ही रही है. किसान ने बोते समय तो नहीं सोचा कि बारिश आ जाएगी. Sir, crops are grown according to the rainfall pattern. For example, in monsoon, people grow different kinds of crops, and then when rainfall decreases, then people grow different types of crops. धनिया के पौधे की स्ट्रेंथ कितनी होती है? Sorry, sir, I'm not aware of that. तुमने धनिया का पौधा देखा तो होगा. देखा. Yes. ठीक है. बारिश गिरेगी उस पर तो क्या होगा? Sir, it will not stand on its own. नॉट स्टैंड ऑन. तो बारिश होती है तो धनिया टूट जाता है. Yes. ठीक है. तो इसका क्या, व्हाट इज द वे आउट? एज एन इंजीनियर व्हाट वुड यू सजेस्ट? इज देयर अ वे आउट? Yes, sir. व्हाट? So the crop can be grown under covered sheds like in poly houses. यस Then it can be saved from rainfall. यस यस, दैट इज द वे आउट. Yes. इंडिया के कितना एरिया पॉली हाउस में है? कुछ आइडिया? Sorry, sir, I'm not aware. इंडिया का बहुत कम एरिया है. चाइना का बहुत ज़्यादा एरिया पॉली हाउस में है. अगर चाइना में इफ़ यू गो ओवर चाइना इन अ फ्लाइट, यू कैन सी पूरा एरिया उन्होंने पॉली हाउस में कवर कर लिया. मिक्स. तो पॉली हाउस में क्या क्या चीज़ पे फ़र्क पड़ता है? व्हाट ऑल कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग पॉली हाउस? So temperature can be controlled. Sunlight, influx of sunlight can be controlled. Irrigation can be done in a controlled manner. Runoff will be decreased. Evaporation losses can be controlled. Yeah, so moisture can also be controlled. Yes, moisture can be controlled. That's how you can create an artificial environment there Yes. for plants to prosper.
Okay. My last question. You love badminton. Yes. What is the size of a badminton court? So the length is 44 feet and the width is 20 feet. Length is? 44 feet. 44 feet. Very good. Width is? 20 feet. This is for singles or doubles? So doubles. This is for doubles. And singles? The singles, the 17 feet is the width and 44 feet is the length. Good, good. Very good. Okay. Champavat, where is it located? Champavat is district headquarters. Yes, sir. Is it near Nepal border? Yes, sir. Okay. Pithoragarh. Yes, sir. So, what are the disputes between Nepal and India? Sir, I believe there is dispute related to water sharing. Land dispute? जोर से बोलो हमें पता ही नहीं चलेगा. Sir, I'm not sure of all the disputes. I have not studied about it. As per locals, there is no dispute. Dispute in the mind of the politicians. What was your BTech project? Sir, my BTech project was design of flexible payment, a flexible payment section using IRC 37 and IIT Pay software. So, codes are converted to software and from software you design flexible payment. उसमें तीन ही तो आइटम होते डिजाइन क्या किया उसमें आपने? Sir, we designed the crust thickness of different layers, and we also designed the mixed design for the bitumen layers, surfacing layers. So how did you achieve the efficiency? क्योंकि ये तो छोटा सा काम है अपना 2 घंटे का है और आपने उसमें जो है पूरी सॉफ्टवेयर भी लगा दी ये भी लगा दी. What is the advantage of it? Sir, we design it in a way to decrease the parameters, to control the parameters that cause the failure of the payment. That is, we control the rutting of the payment and we control the horizontal tensile cracking of the payment. Okay. What are the? I have seen your AI rank is very high. Technically, must be good. How does the economy of Champavat runs? Sir, the economy of Champavat is primarily agriculture dependent. हाल में क्या agriculture है यार? Sir, the economy is not very thriving because of that. People are still, a lot of people are still dependent on agriculture. That's why the economy is not very thriving. Other sectors are, tourism sector is picking up right now, and service sector is also going on the rise. How far do you have any trade with China in that side? Sir, local trade happens between Nepal and Champavat. With China, we don't share a border with China. Because during olden days, there used to be wool, used to be go to China and some carpets and all used to come from there, or vice versa. Yes. Okay. So, what are the minerals there? So the minerals found are sandstone. Stone is one thing. Yes, sir. How about other minerals like phosphate, sulfate? So iron content is high over there. And so do you have any iron ore mines there also? Sir, no, there are no mines over there. There is only borders. It means it is not explored. Yes, sir. Must be having a lot of minerals, valuable minerals. Yes, sir. Like Kashmiri, they got. क्या कश्मीर में क्या मिल गया वो? Nickel, cadmium क्या मिल गया? Lithium. नहीं, lithium. Lithium. Yes, sir. You might be sitting on the lithium bed. So there may be a possibility. Yes. तुम्हारा सब इंडस्ट्री वेलकम कर भागो, हम क्या निकालेगा? इंडिया का पार्ट है. चलो. Anyway, so it is flexible payments. So ठीक. Okay. Okay, Harshit. So I see that you have got a very good rank in GATE in 2023. Yes. So why didn't you join college for MTech? Sir, I wanted to work. At first, I wanted to work somewhere, and I wanted to see what kind of work I like. According to that, I wanted to pursue my specialization. So I hope you are selected in AIL through GATE 2023. Sir, I am selected to GATE 2024.
2024. Yes, sir. So this year GATE only. Yes, sir. So why you want to join engineering services when you are already working in EIL? Sir, Engineers India Limited is a very good reputed organization, but I have been allotted the contracts and purchase department over there, which is primarily a commercial department. We have no engineering work over there. We just do the commercial part of the tenders. So I want to work more in a technical department. So that is the reason I want to shift from Engineers India Limited. But in engineering services also you will be doing mostly the managerial job, you will be dealing with contractors. The work that you will be doing in engineering services will be almost the same? Sir, I believe there will be more, it will be more of a techno-managerial job. But in EIL, it is an entirely commercial job. So can you do a commercial job without having technical knowledge? If that is the case, then why don't EIL recruit managers? Sir, Why they are recruiting through technical? Sir, EIL recruits a number of people and then they are divided in different departments. Some people go to the engineering department and they learn design and engineering. Some people are allotted to the commercial department, which is our department, contracts and purchase. And we are trained to handle the tenders and the commercial part of the tenders. No, but in EIL also you can switch to technical department. Sir, I have been told that the switching opportunity is very rare and it also comes after a lot of progression in the career. Okay, so what is a two-bid system? Sir, a two-bid system is the tendering system where the bidder submits two bids. The first one is the unpriced bid, the second one is the price bid, and they are opened separately on separate days. So what is there in the first bid? So the unpriced bid consists of the technical description of the items, and the price bid consists of the rates that the bidder has quoted against each of the items in the bill of quantities. Let's say one firm is bidding in the process and it does not meet the technical specification. Yes, sir. Will you open the bid for, will you open the second commercial bid? No, for sir. that firm? No, sir. What if that firm commercial bid is the lowest? Sir, if the bidder does not qualify the technical criteria, the bid is straightforward rejected and the price bid is not opened. Okay, what is earnest money deposit? So the earnest money deposit is a small amount of money, usually to the order of 2% of the total contract amount, which is submitted by different bidders. It serves the purpose of disqualifying the non-serious bidders, and it also serves as a security that if a bidder is awarded the contract and if he backs out, then that amount of money is taken by the owner of the what department. happens to EMD when a contract is awarded to a firm? Sir, the EMD is theoretically returned, but usually the bidder submits another deposit, which is the security deposit, and the EMD is counted in that security deposit itself. Okay. Which laws govern the contracts which you do in EIL? Sir, some of the laws that I am aware of are the general financial conditions of the government, which were stated in 2017, the Indian Contracts Act, the procurement related guidelines that government has issued from time to time, and we also have a internal. So what is the EMD according to GFR? Sorry, sir, I'm not sure of that. You said 2%. Sir, it is of the order of the 2%, but I'm not sure of the exact figure. Okay. Under which GFR rule is the GEM governed? Sir, What is GEM? Sir, it stands for Government E-Marketplace. Does EIL do procurement through GEM? Yes, sir, it does procurement through GEM. So under which GFR is GEM governed? Sir, I'm not sure of that. But you must be complying with GM. You must be complying with GFR, and you might be doing procurement on GEM as well. Yes. What is custom bid on GEM? Custom bid. Sir, I'm not sure. May I? Yeah, please. Sir, custom bid should be the
bid that is submitted by a bidder, where he does not completely comply with the conditions set out in the tender document. So he is giving us some deviations on the tender document. So can, like, custom bid itself is a tender document which is not as per the requirement, or which is not as per the set rules? Yes. Chalo, it's okay. Thank you. So Harshit, what are the reasons for land subsidence in hilly region like Uttarakhand? So some of the reasons which came out after Joshimath land subsidence was, first of all, the area was situated over glacial debris, and there was no hard rocks for a great depth beneath the area. Also, due to improper drainage in the area, the soil was further weakened, which showed settlement later on. Another reason of settlement is that a lot of construction is currently being going on in the area. In that area particularly, a new thermal power project is also being developed by National Thermal Power Corporation, which was also to be blamed. Thermal power plant? Sir, it is owned by National Thermal Power Corporation, but it is a hydropower project. It's not a thermal plant. Yes, sir. It is a hydropower project which is owned by Thermal Power Corporation. Yes, sir. And so, sir, also the rivers in the hilly areas are flow in a very steep slope, which carry out a lot of degradation of the material surrounding these rivers. So, sir, these are some of the reasons I can think of right now. How can we prevent this? What can be preventive measures can be taken? Sir, some of the preventive measures which can be taken, first of all, is that proper geotechnical investigations need to be carried out before further development is carried out in the area. Another is that drainage should be properly developed. The water draining should not be allowed to go into soil unchecked, which will decrease the strength of the soil. Another is that the development should be carried out in accordance with all the building bylaws and the guidelines set out by the government. Also, as earthquake plays a major role in that area, so the buildings should also comply with the earthquake-related design guidelines of the government. So these are some of the things I can think of right now. Good. Uttarakhand is also famous for hydropower, as you have mentioned. Yes, sir. What are the famous hydropower projects in Uttarakhand? So first of all, it is the Tiri hydropower complex. Second is the Koteshwar hydropower project. Another one is the Govind Sagar Dam. Another one is the Dhauli Ganga project in Pithoragarh. Another one is Tanakpur barrage. Yes. So these are some of I can. What is difference between barrage and dam? Sir, a dam is an obstruction constructed on the flow path of a river, which is the primary use of the dam is to create a reservoir through which water is supplied to the hydropower complex. It serves other purposes as well of irrigation, supplying water demand as well. But a barrage is primarily used to increase the water level, to supply water to a canal, to supply water to canals which take off from the barrage. Okay. Yes, sir. Why I am constructing barrage? I could have constructed a canal. Yes, sir. And the bed of the canal could be below the bed of the river. That would have solved my purpose. Why I am investing so much of money in constructing a barrage? Sir, a barrage is constructed because first of all, to supply water to the canal, which is free of silt in a controlled manner. Also, a barrage is constructed to raise the water to a required level and ensure the supplies in the canal at a regular level, also at regular intervals. Another use of the barrage is in flood control as well, wherein we stop the water during high demand periods, high flow periods, and release it whenever we require to control the downstream flooding. And if we construct a canal directly, we cannot supply the water in the canal in the controlled manner. Let us say I provide a gate at the head of the canal. Yes, sir. And the bed of the canal is below the bed of the river. Yes, sir. And with the help of this gate, I am able to control. Yes, sir.
the discharge in the canal, then my problem is solved. Sir, the problem is solved. It can be said that the problem is solved because, but still there remains a problem of controlling the flooding. If we, canals are primarily used for irrigation purposes, and if we, during, let's say if a flood comes and we are not able, the river is not able to contain the water, and we are forced to release the water into the canal. So water full of silt will go into the canal, which won't. If barrage is there, then also this will happen. I have to release the water either downstream, but if I cannot release the water downstream, I have to divert it to canal. Sir, canals are primarily opened only for irrigation water. If we found a clear water, if silt-laden water is found, we allow it to go downstream. We don't let it flow into the canal. Why we have problem with this silt? And this silt is very good. All these your plain of Ganga, like in UP and Bihar, and some plains in Punjab, Haryana, they are very fertile, just because of this silt only. Sir, we don't let silt go into the canal because if we let the silt go into the canal, first of all, the silt will settle down. Some of the percentage of the silt will settle down, and it will decrease the capacity of the canal over a time. And we don't want to decrease the capacity of the canal. Also, the silt is not exactly tested for the kind of substance it has in it, the kind of minerals it has in it, and so we cannot let these untested silt go for irrigation, which might be harmful for growing of the crops. So for these reasons, we don't let silt-laden water go untested. Good, sir. Harshit, in Gurgaon there is a rule that if you have a plot more than 100 square meters, you have to have rainwater harvesting. Yes. You are saying the opposite of that, that water should not go into the ground. Sir, I'm not saying water should not go into the ground. You said that. I'm saying silt-laden water should not be allowed to irrigate the lands. No. In the previous question you said, in the hills the rainwater should not go into the ground. Sorry, sir, I did not mean to say that, if I implied that in any way. Where should the rainwater go in a hill? Sir, in a hill, the rainwater goes directly to the, most of the rainwater goes directly to the groundwater table. Yes, so what could be the way out? If you think that the water going into the groundwater will weaken the soil, yes, sir. Then what is the way out? Have you thought of it? Sir, water going into the groundwater, if it weakens the soil in any particular area, it can be diverted into specially created sumps or pits to collect that water during the... Why do you think that this has been going on these ages? Yes, sir. And whatever the क्या कहते हैं झरने होते हैं ना, yes, sir. सोते होते हैं, झरने होते हैं hills में. I have stayed 4 years. They come through that groundwater only. Yes. People will die. It should go inside, otherwise they will not get water. There will be no civilization. Sir, I'm saying that the drainage of the city, which should not flow unchecked into the ground, that should not go into the drainage, of course. Let's say the rainwater can be stored in check dams. Yes. Small check dams can be built. Yes. And if you store the water right at the top of the hill, Nothing from there like onwards, yes, then it will not cause any flooding ever. yes, जहाँ रोक सकते हो रोक लो उसको. yes. Anyway, thank you so much. Your interview is over. We'll call you back for feedback. Thank you, sir. Okay. हर्षित, जब आप अंदर आए, Yes, sir. तो you said, "Good evening, sir," to all 4 of us. Yes, That was not required. yes, sir. ठीक है? या अंदर आके बटन खोलना was also not required. Yes. बाहर से खोल के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes. ठीक है? ऑलरेडी तुम जॉब कर रहे हो. Yes, sir. कितनी तनख्वाह मिल रही है? 75,000 पर month. तो तुम दुखी क्यों? सर, दुखी तो नहीं. दुखी नहीं हो? नहीं, और शक्ल से तुम्हारा ऐसा लग रहा है. सर, वो सीरियस हो जाता हूँ. हाँ? फॉर्मल सेटिंग में सीरियस अपने आप हो जाता हूँ. नहीं, सीरियस होना एक अलग बात है. Yes. ठीक है ना? फ्रिवलस नहीं होना चाहिए. Yes. ठीक है.
बट इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं, यू कैन स्माइल। तो अल्टीमेटली जो इंटरव्यू है ये एनर्जी एक्सचेंज का खेल है। अगर तुम ऐसे बैठोगे बिल्कुल मरे हुए या बिल्कुल दुखी, तो फिर लोग सोचेंगे यार ये को क्या करें। थोड़ा चीयर अप करके एकदम एंथुसियाज्म दिखाओगे, देन इट विल मेक अ डिफरेंस। कब है तुम्हारा इंटरव्यू? 10th अक्टूबर। 10th अक्टूबर, नेक्स्ट मंथ 10th। सुबह शाम? मॉर्निंग। चलो अच्छी बात है, बट चीयर अप, ठीक है? पूरी एनर्जी एंथुसियाज्म दिखाओ, ठीक है? स्माइल करके दिखाओ एक बार। नहीं आता स्माइल करना? आता है। आता है। स्माइल करके दिखाओ। स्माइल करोगे तो यू विल गेट मच बेटर मार्क्स। देखो जब एनर्जी एक्सचेंज होना है तो या तो तुम एनर्जी ले लो बोर्ड वालों से या मार्क्स ले लो, तुम्हारी चॉइस है, ठीक है ना? तुम एनर्जी लेते रहोगे तो मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है? और 60% टाइम जिसने सवाल पूछा उसकी तरफ देखो, 40% टाइम दूसरों से भी कनेक्ट करो। तुम एकदम एक बंदे की तरफ देखी जा रहे हो, ठीक है? सबके साथ कनेक्ट करो, ठीक है? एंड यू कैन यूज योर हैंड्स ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज जितने भी कैंडिडेट आए, एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट कि तुम एकदम फंसे हुए थे, दुखी थे, योर नॉलेज वाइज यू आर वेरी गुड। पर ये है कि नॉलेज तो तुम्हारी इन्होंने रिटर्न में देख ली पहले, अभी सिर्फ पर्सनैलिटी देखनी है। तो जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है वो बिंदास होकर दिखाओ। घर में क्या कहते हैं, तुम एकदम कोने में बैठे रहते हो घर में, ना? मम्मी पापा दोनों सर्विस में चले जाते हैं, क्या करे बच्चा? बेटा देख रहे हो पड़ता है। रिटायर होने वाले सर। रिटायर होने वाले सर अब। कोई बात नहीं। सो पुट सम एनर्जी इनटू दैट, ठीक है? यू विल डू वेरी वेल। हाँ जी, वांट टू ऐड समथिंग? हाँ अच्छा है, बट जैसे प्रोजेक्ट यू डिज़ाइन तो यू हैव टू बताना पड़ेगा ना, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड दिस एंड दैट, ठीक? तो वो यू कैन डू इट। Second thing is you said even in cities, Nainital city, and there is a rain, there is a lot of water going through drains. Some comes to the lake and is drained out. Nothing wrong with that. In any season or otherwise, you come over from Nainital to Kathgodam, you will find many springs. Water is coming out. People are using it. It looks really great. Taxi drivers, they will come, they will take water. Was there or उसको गाड़ी को they will spray water on that. So nature is never wrong. Yes. It is only the individuals, human beings are wrong. आपको once you reply, you have to apply this principle. ठीक? हर्षित, एक तो आपने जो जवाब दिया था कि why you want to leave EIL and then join engineering services, वो थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं था। आपने बोला कि आप कॉन्ट्रैक्ट वाले में नहीं काम करना चाहते हैं, तो इसको आप ऐसे रिफ्रेम कर सकते थे कि सर यहाँ पे जो मैं जॉब कर रहा हूँ उसमें मेरा ये प्रोफाइल है, बट सिंस मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया है, आई वांट टू इन्वॉल्व माई सेल्फ इनटू मोर टेक्निकल जॉब्स। इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है यहाँ पे जाके मैं कमर्शियल एस्पेक्ट तो देखूँगा ही, जो मैं अभी EIL में देख रहा हूँ, उसके अलावा मैं टेक्निकल एस्पेक्ट भी मैं देखूंगा। आई विल बी इन्वॉल्व मोर इन पॉलिसी मेकिंग। सो आई फील दैट इंजीनियरिंग सर्विसेज वुड गिव मी मोर और ब्रॉडर एक्सपोजर एज कम्पेयर टू व्हाट आई हैव इन EIL, दो द EIL जॉब इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आप ऐसे बोलोगे, अदरवाइज अगर मान लो आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं हुआ तो EIL में तो आप काम ही नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपका मन ही नहीं है ये काम करने का। आपने कहा कि ये जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप पहले स्पॉट पे ही ज्वाइन करते। सर अलॉट उन लोगों ने अपने आप किया। हाँ सर उन लोगों ने अपने आप अलॉट किया, हमने चूज नहीं किया डिपार्टमेंट। नहीं वो ठीक है, पर तुमने अप्लाई तो किया होगा। यस अप्लाई किया, फिर आपने ज्वाइन भी किया। यस तो अगर आप नहीं ज्वाइन करते तो दूसरी PSU आपकी उसका दूसरा आंसर है, बेटर आंसर। सब बीइंग पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट इज प्रिविलेज। ऑल वे रिस्पांसिबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हमारे कंपनी डायरेक्टर्स, so there is no comparison, so it is an honorable job. I am sure, simple as that, and this is fact. Okay. आपको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो करंट डिसीजन है वो आपका गलत है और फ्यूचर वाला बहुत बढ़िया होगा।
EIL में जब ज्वाइन करने से पहले भी तो आपने यही सोचा होगा कि यार बहुत अच्छी PSU है, मैं चला जाता हूँ, अप्लाई किया होगा। यहाँ पे अगर मान लो आपको आपका फर्स्ट चॉइस नहीं मिला, लेट्स से आपका लास्ट चॉइस जो है, लास्ट चॉइस आपने दिया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको BRO मिल जाता है तो वहाँ पे क्या करोगे आप? काम करेंगे। एग्जैक्टली वही, देयर शुड नॉट बी एनी, आपके दिमाग में डाउट होना ही नहीं चाहिए इन सब चीज़ों। ओके, तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं इनका आंसर शुड बी वेरी लाइक वर्दी मिलेगी, स्लूट मिलेगा, जस्टिफाई आपको करना चाहिए। ओके, सो दैट इज बाकी रेस्ट एवरीथिंग वाज परफेक्ट। आपके करंट प्रोफाइल से योर आंसर्स वर गुड, बट जो डेटा आप बोल रहे हो, GFR ने अभी EMD को 3 to 5% गाँव का एक लड़का था वो, तो आपने वो पर्टिकुलरली 2% ही बोल दिया, वो दैट इज नॉट ओके। ठीक है, तो ये डेटा जब भी डाल रहे हो देन यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, जेम वगैरह पढ़ लो। अगर तुमको 60% श्योर है कि जो आंसर तुम दे रहे हो ठीक है, तब बोलो मे आई मेक ए गेस, फिर 2% बोल दिया तो ठीक है, ठीक है। अदरवाइज सिंपली से सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आई लर्न मोर अबाउट इट, बस। ठीक है, बाहर निकल ला, खट से बाहर निकलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, और क्या होगा? एग्जैक्टली, कोई गोली तो मारेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है ना, चुपचाप निकल दो। अगर 60% श्योर हो, बोलो आई मे आई टेक अ गेस, फिर तुम गलत भी बता दो, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। जेम पे आजकल बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का। जेम कितना बड़ा हो गया है, जेम का रेवेन्यू कितना है, अभी कितने ऑर्डर्स जेम पे हमने डाले हैं, फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या है। जेम में बहुत सारी चीज़ें अभी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, PSU एवरीथिंग हैज़ टू बी थ्रू जेम। तो जेम के बारे में पढ़ लेना। GFR का आई थिंक 149 एंड 151 गवर्नस जेम, तो वो देख लेना। आपके जो कंपनी है EIL, उसमें क्या क्या जेम GFR से रिलेटेड क्या क्या है वो पढ़ लेना। सो और बिडिंग वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, व्हाट इज़ पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज़ प्री, ये सब आपको थोड़ा सा देख लेना। अदरवाइज इट वाज वेरी परफेक्ट। सर नहीं, गुड। आपको कुछ पूछना तो पूछो सर। सर्विस ऑर्डर प्रेफरेंस जस्टिफाई करने का मुझे आंसर नहीं मिल रहा है अभी तक कि कोई पूछेगा नहीं। CS रोज पहला भरा है, चॉइस है, सीनियर्स ने बताया, ठीक है, कॉलेज के सीनियर्स ने बताया, भैया लोगों ने बताया, ये मुझे समझ में आया, बस दैट्स इट। वैसे भी कोई नहीं पूछेगा, कोई ऐसा जनरली नहीं पूछते। हाँ, गवर्नमेंट सर्विस है, छोटा मोटा डिफरेंस, ठीक है, कोई इसका कोई मेजर फर्क नहीं है। और बताओ और तो परफेक्ट है, सर्विस ऑर्डर में कोई दिक्कत है ही नहीं। सर्विस ऑर्डर में यू कैन से कि सर ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऑल ओवर इंडिया मेरे को पूरा एक्सपोजर। बॉर्डर रोड्स थोड़े पहला वाला बॉर्डर रोड्स नहीं, सेंट्रल इंजीनियरिंग है सर, वो कि आप सर ऑल ओवर इंडिया मेरे को एक्सपोजर मिलेगा। इन 6 ब्रांच में से मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपोजर इसी में मिलेगा, सबसे ज़्यादा मतलब जो काम इंडिया में है NHAI और इन सब से रिलेटेड वो यहीं पे है। So this I feel that this department will give more opportunities, so इसलिए मैंने ये भरा। सर एक काउंटर क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकते हैं कि CS रोड्स का काम है जो मेरा पहला प्रेफरेंस है, BRO भी रोड्स का काम है जो कि मेरा लास्ट प्रेफरेंस है, तो ऐसा क्यों किया है? तो पोस्टिंग प्रोफाइल आई प्रेफर दिस बट सूट मी, वो उनको भी पता, कोई नहीं पूछे। बॉर्डर रोड बॉर्डर पे जाता है, बाकी शहर में रहता है, बहुत दिल्ली में रहता है यार। जो वहाँ बैठे हैं ना, वो भी यही करके बैठे हैं, ठीक है, तो दे डोंट माइंड दैट मच। ठीक है, तुम्हारा सबसे बड़ा नेगेटिव है कि तुम दुखी हो, बस। इतनी दूर आने के बाद भी दुखी हो तो मजे की बात नहीं। तुम्हारे रिटर्न में कितने नंबर आ जाएंगे? सर मेंस में अटेम्प्ट तो 560 का है, वेरी गुड, अराउंड 430 तक आ जाने चाहिए एक्सपेक्ट। प्रीलिम में 240, एक आंसर के हिसाब से 240 बन रहा है, एक के हिसाब से 257 बन रहा है, तो एनीवेयर बिटवीन। यू विल इजीली मेक इट। 130 नंबर ले आओ, टॉप करोगे। सिलेक्शन तो आपका श्योर है, होपफुली। बस यही है कि आपको टॉप करना है, तो टॉप करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुश मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। इसका एक एक वर्ड तुमको पता होना चाहिए, और ये जो तुम्हारा जवाब है कि वो लोहा घाट है क्योंकि लाल है, तो उसको थोड़ा और गहराई में जाओ। वहाँ को आयरन कंटेंट ज़्यादा है, एक्चुअली आयरन सेगमेंट है, कौन सा ओर है आयरन का, ठीक है ना? यस।
जो वो और क्या पाउडर के फॉर्म में है जो कि पानी में बह जाता है, तो वो थोड़ा सा एक बार देख लो आयरन के क्या क्या और होते हैं वहाँ एक्चुअली है कि नहीं, कोई और मिनरल हो और लोगों को लगा कि ये लोहा है, ठीक है ना, थोड़ा तो गहराई में जाओ उसको, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। 130 तुमको आराम से मिलते हैं एंड यू शुड मेक इट। सर आज कितने दिए आप? 130 तो तुमको आराम से मिलते हैं आज, ठीक है। थोड़ा सा जोर लगाओगे तो टप जाओगे। थैंक यू। ठीक है, तो मिठाई का डब्बा लेके आना अगली बारी। बिल्कुल। कब है इंटरव्यू? 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर। बताना यहाँ बांधना मत, बाहर यहाँ नहीं बांधना, Yes. ठीक है। वेरी इरिटेटिंग, यस। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक।